समस्त को सप्रेम नमस्कार. At the outset, I seek blessings of Ramakrishna ji, Ma Sarada Devi ji, Swami Vivekananda ji, and Brahmanand Maharaj ji to give me the blessings and all of you also the blessings. I revered Swami Atma Priyanand ji, Swami Atma Prabhanand ji, all monks of Ramakrishna Mission, and all the divine souls who are present here. Again, once again, Supreme Namaskar to all of you. The today's topic that has been given to me is Swami Vivekananda's ideas of social and economic development of India. I would combine both socio-economic development, as Maharaji has already told right from the beginning, that will be more appropriate, socio-economic development, because both the concepts are interlinked with each other. Dita concept संपूर्ण भाव में जड़ित अच्छा. None of these concepts will be alienated from each other, and if so, that is what we are seeing today in the entire world. If some country is developing in the area of economic progression, there is a huge societal degeneration or social degradation. Or any country who have got a strong foundation of social foundation may not be economically progressive, but if you calibrate in the form of happiness index, obviously that society is much powerful, which we are seeing today in various tribal communities, Janjati communities. They don't have money. They are still poor in the parlance of economic progression, but so far the happiness is concerned, they are the most happiest ones. So that is why both are coined together, the socio-economic development, and India is rich in this context. Why India is rich in this context? आमे जदि 11th century को जिबा ताले देखिबा India was the richest country in the world. 34% world GDP only India contribute करूथला. आज कहीं कि सेटा less than 3% को आसी गला. कौन एमिति परिवर्तन हो गला जे 34% रिचेस्ट कंट्री ग्लोबली आज वर्तमान वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री. कहीं से जिनटा को जब आम आत्मावलोकन करवा ताले तार मूल आम देखा निश्चित भाव जे यही जो सोशल वैल्यूज सेटा ही किछि परिमाण रे और रादर बेसी परिमाण रे ही नष्ट हो जाइछि गत 900,000 वर्ष भितर. ये जो इन्वेशन होइछि, बी इट मुस्लिम इन्वेशन फॉलोड बाय इंग्लिश इन्वेशन, ये इन्वेशन फल रे आमर जो सोशल वैल्यू सिस्टम सेटा डिग्रेड हो जाइछि. सेटा जतले स्वामीजी 3 वर्ष काल होल कंट्री को पदयात्रा रे विजिट करिसेंती 1890 रु 92 भितर से जिनस गुड़ी को देखिंट हृदंगम करिसेंती जे ये जो एब्जेक्ट प्रॉपर्टी, ये जो सोशल डिजेनरेशन, ये जो धर्म को कदर्थ कर दिया जाइछि, ये जो कास्ट प्रथा आसी जाइछि, वुमेन एम्पावरमेंट उपर कुठारघात होइछि, यही सब जिनस गुड़ी को व्यथित करिछि. तेणु सेथिपाई सी जाइछंती व्यथित होइकि डिवाइन रॉक कन्याकुमारी रे तपस्या करिसेंती 3 दिन 25, 26, 27 डिसेम्बर 1892 मसीह. सेठ हुई चिंताधारा तंक भीतर आसीची जे दुईटी कॉन्सेप्ट को से राउजिंग कॉल हिसाब रे चारिआड को प्रसारित करिसेंती. मनुष्य निर्माण और राष्ट्र पुनर्गठन, मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग. ये जो चारोटी शब्द मैन मेकिंग एंड नेशन बिल्डिंग आज पर्यंत समस्त मन रे आंदोलित करुछि. आज नहीं आउरी आसंता 500 वर्ष धरिकी कि 1000 वर्ष धरिकी ये कॉन्सेप्ट ही सबुदिन चिरजीवित होकर रहिबो. कारण ये कॉन्सेप्टर मूल रही मनुष्यर चरित्र आ देशर पुनर्गठन, देशर चरित्र. तो यहीटा को जदि आम डीप डाइव करवा ताहले देखिबा ये व्यक्ति किए जी कि ये जिनिसटी प्रसारित करिछि तांकु जदि आम शब्द रे प्रकाश करबा चाहिबा बोधे इट विल बी टोटली इनसफिशिएंट. स्वामी विवेकानंद को कौन सी व्यक्ति कौन से शब्द रे परिप्रकाश करि परिबो नाही, किंतु तथापि चेष्टा तो करिबा.
से चेष्टार किछिटा हला ही इज ए ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, ही इज ए मॉडर्न एजुकेशनिस्ट, ही इज हैविंग ए मॉडर्न अप्रोच, ही इज ए ब्लेंड ऑफ attachments and detachments. He himself is a yogi, but simultaneously he is a nationalist. Not only a nationalist, he is an internationalist, because सब जिनिस को सी ग्लोबल व्यू रे देखुले। तेणु तांको वर्णना करवा बहुत कठिन, बट आज टॉपिक को नहीं जदि आम देखा सी जो ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, कहीं आम कहूचे ग्रेट सोशल रिफॉर्मर, तांकर जो मॉडर्न अप्रोच, तांकर जो कॉन्सेप्ट से अप्रोच रे से कहउचंती जे इंडिया भारत निश्चित भाव में विश्वगुरु हम। दुईटी कॉन्सेप्ट से कहते, प्रथम कॉन्सेप्ट से कहले जे मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग, कहीं तार बैकग्राउंड रे थिला जो एब्जेक्ट प्रॉपर्टी को देखी थे, कास्टिज्म, वुमेन हारासमेंट, ये सब जिन देखिक से निजे व्यथित हो जाते, किंतु जितेबाला सारा विश्व भ्रमण कले 20 वर्ष भ्रमण कलापर सी कहले जे निजे एडमिट करुँच जे मु मोर विचारधारा बोधे निहाती भूल थिला, मु भाबुतिली जे भारत वर्षटा नुह ठीक नुह बहुत नष्ट हो जाइछि, किंतु आज रियलाइज करुच्ची सारा विश्व को जितेबाला देखुची जे आज रियलाइज करुच्ची जे जो मोरालिटी अच्छी, जो रिलीजियस पियर अच्छी, जो फॉरवर अच्छी, जो स्पिरिचुअलिज्म अच्छी, इंडिया छड़ा कौन सी कंट्री निकट रे नहीं। इंडिया इज द रिचेस्ट हार्बर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, मोरालिटी एंड ह्यूमैनिटी। 20 वर्षर भितर ए प्रकार परिवर्तन जो ओपिनियन सी नहीं थिले, से ओपिनियन को से निजे ही परिवर्तन कले। से शास्त्र कहूची जे आपण जदि ओपिनियन टाको कौन सी पॉइंट रे रिजिड करदेले ताहले आपणकर मृत्यु से दिन ही होगला। प्रोफेसर जेडू कृष्णमूर्ति, वन ऑफ द मोस्ट फेमस वर्ल्ड फिलोसोफर इंडियन ओरिजिन, से कहते जे जदि परसेप्शन को आप जो दिन रिजिड करदे जे मु सब जानी मो ओपिनियन ठीक मुझे मो छड़ा कहीं जानी ना से दिन आपणकर मृत्यु होगला। जदिव आपणकर मृत्यु किछि वर्ष पर हो पारे, किंतु यू आर डेड एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन यू हैव गॉट ए रिजिड परसेप्शन। लुक एट स्वामी विवेकानंद, he himself at one point of time perceived that India is moving towards a point of devastation, but after 20 years he changed his perception that India is going to be the Vishwaguru. India is having, that is ऐसे कहउचंती एही भारत माता जो रास्ता रे चलीची ए रास्ता रे केही ताको अटकई परिबे नहीं। ए रास्तार सब दायाद मान से सब दायाद मान को उद्बोधन दौरान पर मुहूर्त में जे सी भिजुअलाइज कर देखुं ए भारत माता को कहीं अटकई पार ना। सो इंडिया विल बिकम द विश्वगुरु इन द डेज टू कम। से विश्वगुरु नहीं कि जो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सहित जोड़ा जाइए, आमे जो आज आमर भारत वर्ष में प्रत्येक दिन चलुची जे 2047 मसीह इंडिया विल बिकम द विश्वगुरु। से विश्वगुरु नुह जे इकोनॉमिकली आमे जीडीपी वाइज आमे वर्ल्ड नंबर 1 हवा ही पारे, किंतु विश्वगुरुर मूल अंग हला जे आमे आमर जो थिला रिचनेस, स्पिरिचुअल रिचनेस, ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज, सैक्रिफाइस, रिनंसिएशन, ये जो वैल्यू गुड़ाक आमर रिचनेस थिला, आमे जो आमर सभ्यता हजार हजार वर्ष धरिकी रही आसी बंची बंची रही से जिनिस गुड़िक आम पुणी पुनरुत्थान हम आकू नहीं कि आमे विश्वगुरु निजे करवा, जाफल होल वर्ल्ड विल लुक एट अस नॉट फ्रॉम द इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक प्रावेस, बट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू द स्पिरिचुअल प्रावेस। से कहते गोटे समाज भल समाजटे कौन, ए कल्चरली रिच पीसफुल एंड हार्मोनियस सोसाइटी इज व्हाट। से कहते दिस सोसाइटी, यही समाज जार दुईटी अंग मात्र अच्छी, गोटे अंग है जार बैकबोन फाउंडेशन है स्पिरिचुअल फाउंडेशन, द्वितीय अंग है मैटेरियलिस्टिक फाउंडेशन। तेणु समाज पाई दीटाक अंगर निहाती जरूरी। The spiritual foundation and the materialistic foundation are essential for the society, but we should really weigh more the spiritual foundation. He says that जो समाज रे spiritual foundation
ओजन अधिका अच्छी मैटेरियलिस्टिक फाउंडेशन अपेक्षा सही समाज निश्चित भाव में चिरस्थायी रहिबो दीर्घस्थायी रहिबो एंड सेठी निश्चित भाव में पीस हार्मोनी आसीबो। तेणु ये रहा सोशल डेवलपमेंटर प्रथम मंत्र जे सही समाज को आम गढ़ी उठा जो थे कि आम स्पिरिचुअलिज्म को आम ता भितर डीपली पसई दे पारिबा। से कॉन्सेप्ट कहते जे वर्शिप करुचे मंदिर को जाऊे हाँ शिव प्रसन्न हो पारती किंतु से कहते रियल वर्शिप एटा जोठी कि आपण से लोक को पूजा करुछंती जी दरकार करछि जी पुअर अच्छी मिजरेबल अच्छी डाउनटोडन अच्छी ताकू आपण कोर ऑफ द हार्ट रु आपण ता भितर शिव को उपलब्धि करिक जदि पूजा करुछंती ताहले सेही पूजा द्वारा शिव निश्चित भाव में प्रसन्न हेबे। खाली मंदिर गले जे शिव प्रसन्न हेबे एई पारंती किंतु एटा हला रियल वर्शिप जेतेबेले आपण डाउनटोडन पुअर मिजरेबल डेस्टिट्यूट्स ये मानक आपण मन भितरू तांको भितरे भगवान का अस्तित्व को देखिकी आपण तांको सेवा करुचंती सेही जो सेवा करुचंती सेहीठारे निश्चित भाव में सेही जो सैक्रिफाइस करचंती सेही जो सेवा करुचंती ता द्वारा आपणकर जीवन पुनरुत्थान हबो आपणकर साल्वेशन हबो इटर्निटी आड़ को आपणकर गति हो रहिबो। तेणु ये जो कॉन्सेप्ट को से दौरान दिस इज व्हाट इज द स्पिरिचुअल फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी दैट ये जो रिनंसिएशन एंड सर्विस आमर मूलमंत्र ये सोसाइटी मूलमंत्र आम जदि देखा आज जिते दिन आमर इतिहास अच्छी 23टी सिविलाइजेशन विश्व थिला 23टी सिविलाइजेशन आम जदि देखा 19टी सिविलाइजेशन ऑलरेडी मृत ओनली 4टी सिविलाइजेशन भारतीय सभ्यता को लेकिन ओनली 4टी सिविलाइजेशन आज पर्यंत बंचिक रही कहीं बंची रही कारण यही जो सोशल फैब्रिक्स ये जो रिचनेस ताटा से बंचिक रही किंतु सी भी दुख अनुभव करुँच जे अरे आम जानुचे तथापि आम से पाश्चात्य सभ्यता पछरे दौड़ुचे जहाँफल आमर पुणी से इकोनॉमिक प्रोग्रेशन को आम धरी चलीचे आमर निजर जो मूलमंत्र स्पिरिचुअलिज्म आम ताको कंप्रोमाइज कर देचे। से आह्वान दौरान जे एज लॉन्ग एज द स्पिरिचुअलिज्म इज विद इन यू this society, this human being is not going to die. That means this is already there in our mind. It is already there in our intellect. What is needed is to reignite. आमे से जिनसा को पुनर्जीवित करने को पड़ो जो कि आमे निश्चित भाव में देखा जे आमे ही अन्य पाई निज पाई ग्रो करवा प्लस अन्य पाई निश्चित भाव में साहाय्य करवा। तेणु यही जो समाज जो समाज रे जहाँ पाखे किसी अच्छी सी जदि दबा नबा आरंभ कर किछिटा सैक्रिफाइस कर अन्य मान कंट्रीब्यूट कर भावंतु से सभ्यतार लव बॉन्ड देयर विल बी ए यूनिटी ऑफ पर्पज देयर विल बी इक्वानिमिटी देयर विल बी नो डिविजिवनेस। आज इकोनॉमिक प्रोग्रेशन जदि आम खाली देखा दिस लीड्स टू डिविजिवनेस। आज विभिन्न सभ्यता से कहते आउ थे जे ये जो सभ्यता ये सभ्यतार परिचय कला जदि आमे आमर परिचय दबा ताहले आमे आमर परिचय दबा नहीं जे आमे हिटलर वंशधर कि आम कंट्री आर्म्स रे रिच वी आर द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड इन आर्म्स एम्यूनिशन वी आर स्ट्रांग इन वॉरफेयर व्हाट वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई आवरसेल्व्स वी आर द वंशधरस ऑफ ग्रेट ऋषिज एंड मुनीज। आमे यही ऋषि मुनिंकर वंशधर आमरी यहीटा परिचय से ही परिचय को लेकिन आम जीवा समाज को गठन करवा। से कहते तुम आखि खोल देख तुम साइड रे जो नेबर अच्छा ही मे बी ए सेज सी भी सेज हो पारती एपटे गोटे ब्रूट थाई पारे बट एपट नेबर जड़े सेज थाई पारती देखा जरूरत अच्छी दरकार अच्छी आपंकर आखि खोलिबा। आप जदि आखि को बंद कर रखिए डार्क भीतर रहा चाहिए ताले भगवान आसिले भी बंचई पारे ना। सो ओपन योर आईज आउट ऑफ द डार्क सी देयर आर मिलियंस ऑफ सेजेस जस्ट बाय द साइड ऑफ माय as neighbors. Simultaneously there may be brutes but look at this millions of sages because we are the disciples of these sages for thousands of years.
दैट इज आम सभ्यता आज तिष्टिकी रही एंड तिष्टिकी रहिबो से इंडिया को विश्वगुरु बोली प्रोजेक्ट करुछंती तांकर चिंताधारा अच्छी जे यही विश्व रे यही युव संप्रदाय कौन हो जाइए कहीं से भीतर आलस्य अच्छी से 20 वर्षर विजिट कलापर ग्लोबाली विजिट कलापर देखुंत जे अन्य सभ्यतार तो ये आलस्य लेजिनेस तो नहीं कहीं ये इंडिया रे एते लेजिनेस एंड पर्टिकुलरली द यूथ जनरेशन तेणु स्पेसिफिकली सी आह्वान दौरान यूथ को अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड से आहरी कहते जे तमें ब्रूट्स तमें जदि न करि पारिबो तमें जदि लेजी हबो ताहले तम पई भी नर्क भी स्थान नहीं तम पई नर्क भी स्थान नहीं तेणु तमें सब वल्गर पीपल सो प्लीज अराइज अवेक and ensure that you are the great torch bearers. You have got indomitable spirit, energy. Just feel that power which is within you. Realize, say it means a कहउचंती, and that is for this purpose I have come to rouse you. That feel that you have got huge power hidden within. So ये power को उज्जीवित करो and देखो आज निश्चित भाव रे तमें ही मिलियंस ऑफ सेजेंस कर दाया दे पार एंड भारत को विश्वगुरु आड़ को निश्चित भाव आगे चलो पुनर्बार बारंबार कहूँ विश्वगुरु माने आमर फोकस अच्छी स्पिरिचुअल फाउंडेशन उपर बेसी गुरुत्व इकोनॉमिक फाउंडेशन ऑब्वियसली बढ़ी चलो केमिति बढ़िबो इकोनॉमिक फाउंडेशन से कहते जे ये समाज को गठन करने दरकार कौन ये समाज को गठन करने दरकार राइट एजुकेशन जदि आम ठीक एजुकेशन दे पारिबा ताहले निश्चित भाव में समाज पुनरुत्थान हो पार सी जिनसटी कहीं कहले राइट एजुकेशन कारण से जिनसटा को सी पुणी लक्ष्य कले जे एजुकेशन जोटा आमर रिच थिला सेटा को विध्वंस कर दिया जाए गत 900 वर्ष भितर एंड पर्टिकुलरली ब्रिटिश जमाना रे जड़े ब्रिटिश हिस्टोरियन सी जड़े एत स्वास्थ्य तंकर भल नथिला प्रोफेसर हेन तांको जबरदस्ती ब्रिटिशर्स तांको पठेले इंडिया को जे तमें स्टडी कर इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड रेकमेंड कर जे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को केमिति भांगी दिया जीवो से जेतबेले आसिले देखिले जे लक्ष लक्ष गुरुकुल टाइप रो स्कूल्स अच्छी जोटी स्किल्स ट्रेनिंग दिया जाउची हजार हजार संख्या रे वैदिक स्कूल्स अच्छी जोटी वैदिक रिसर्च चालुची सी देखिले यही सभ्यतार यही टाइप रो एजुकेशन सिस्टम रे जदि चलो ये देश को कहीं नष्ट करें जिते इन्वेशन हो तेणु सी से रेकमेंड कले जे सिस्टम इज यूजलेस एठी ये सिस्टम रे एजुकेशन ठीक दिया जाऊ नहीं तेणु इंग्लिश सिस्टम में एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाऊ जो सिस्टम रे हमर कैरेक्टर बिल्डिंग थिला जो सिस्टम रे मैन मेकिंग कॉन्सेप्ट को फोकस दिया जाउथला जो सिस्टम रे आमर लाइफ कॉन्सेप्ट को फोकस दिया जाउथला जो सिस्टम रे सेल्फ डिसिप्लिन सेल्फ रेस्पेक्ट सेल्फ रियलाइजेशन यही जिनस गुड़ी को फोकस दिया जाउथला सेठी स्टार्ट हो गला ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल तो यही जो डिस्ट्रक्शन कर दिया गला से आमर किछि लोक भी से मिसी गले ताकू भी प्रोत्साहन करिकी कारण ब्रिटिश चामचा हाँपाई प्रोत्साहन करिकी से माने भी स्ट्रक्चर टाक डिस्ट्रॉय करदे तेणु नोटेड गांधीयन फिलोसोफर धर्मपाल जी कहते देयर आर 5 लाख सच गुरुकुल बेस्ड स्कूल्स जोटा कि स्किल इम्पार्ट करुला तेणु स्वामी जी से कहते से कहते कौ कालू यहाँ धर्मपाल जी कहते स्वामी जी कहते राइट एजुकेशन इज वन व्हिच actually empowers the student for expressing his freedom of learning and experimenting new things, and simultaneously it should be man making, life enriching and focusing on self discipline and self development जोठी की इनोवेशन रा गुरुत्व अच्छी सेटा थिला हमर सेटा थिला स्वामी जी कहवा पूर्व सेटा एक्चुअली थिला रियल मुस्लिम सिविलाइजेशन सेटा थिला ब्रिटिश सिविलाइजेशन सेटा डिस्ट्रॉय हो जाए तेणु जो स्किल इम्पार्टमेंट आज आम देखुचे से स्वामी जी कहते जो एजुकेशन इम्पार्ट करा जाउची
से एजुकेशन रे गुडे इनफॉरमेशन ओवरलोड कर दिया मुंडरे सो मुंडरे राइट तैयारी होची lot of information is remaining undigested so we are just acquiring information we are not assimilating noble ideas and in the process because of this non assimilation of noble ideas we are fit for becoming clogs we are not fit for becoming leaders innovators creators so seit mein se barambar focus karuchandi that should be a right education so it is high time that we need to revisit the education system तेणु आज जदि आप देखुवे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा कि ओनली 2020 जदिव ना दिखाई आसी 2021 शेष तेणु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रे यही कॉन्सेप्ट गुड़ा को किछि मात्रा रे वर्तमान तक इनकॉर्पोरेट कराई द वैल्यू सिस्टम एथिक्स ह्यूमैनिटी यही एंगल गुड़ा को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बट केते वर्ष पर दीर्घ 75 वर्ष पर स्वाधीनतार 75 वर्ष पर सो लॉट ऑफ time has already been wasted to drive India towards the path of Vishwaguru. But yes, let us not repent for the past. Whatever has already been done. If at all we will start again digging about the past and worrying about the future, we will not be in the present. So we have to be in the present to ensure that whatever we have to do it now and now. So, seithipai se kauchanti start developing a society with a strong spiritual foundation, energize the youth who can contribute, who can sacrifice, who can think that in addition to developing himself, he will be the great resource for contributing for the well-being of others, the fellow beings. Seiti se puni kauchanti je as a preacher of Advaita Vedanta, which he has converted into practical Vedanta, he kauchanti what is Vedanta? Vedanta is nothing love for humanity, love for self. And when you love for self, you are also loving others as if you are loving for self. So that is what is Vedanta. That means don't love others as a brother. Baki religion, it is being considered that you love others as brothers. But Vedanta says that you love others as if he is your own soul. So that is what the philosophy he has been preaching throughout, and that philosophy is remaining very rich not only today, for the years to come, and that is why he is an inspiration for everybody. Coming to the economic development, again, how can the economic development will happen? Again, we have had society, we have built a society, fine. We have had the right education, fine. But can these two things build a society with strong economic foundation? Obviously, no. So what is needed? That the backbone of the society, we all are individuals. If at all we can ensure our self-development, self-enrichment, self-confidence level, self-motivation, self-inspiration, and we will focus on all these attributes, we all can be a leader in our own areas. So if at all we can be a leader in our own areas, we are definitely going to be the torch bearers for the entire world. Just imagine a small situation which I always used to give in the management institutes to the youth. I always used to give this statement that imagine a situation in the Western world. The aging population has increased substantially. Aji janmo hounai, youth bahau nahanti, छुआ जन्म करू नाहांती, एजिंग पॉपुलेशन कर लाइफ स्पैन बढ़ी चली, सो एजिंग बढ़ी चली, द सोशल एक्सपेंसेस टू मेंटेन द एजिंग पॉपुलेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग रैपिडली, एंड देयर इज नोबडी टू टेक केयर ऑफ दिस पॉपुलेशन. हु इज गोइंग टू टेक केयर? आज भी से जदि रियलाइज करुँच नाई अच्छा बाबा मैंने तुम मैंने बाहा जा छुआ जन्म कर, बट से माने काली बड़ होइकी तांको पाखरे से प्रकार एबिलिटी आसी से माने केयर नबा पे एबिलिटी आसला पाई 20 वर्ष लागि जिवो. इंडिया किंतु आज 65% of the population is less than 35 years old, completely youth, full of energy, and if they can develop their own self, they will not be lazy, they will feel that they are the souls of divinity,
and with a bit of sacrifice, they will consider that I've got a role to play for the outsiders, for others, then they will become the torch bearers. And these are the youths who will go to this world, to this part of the world, and contribute for the caring and sharing of their wealth to these people. As a result, just imagine a scenario. Now whole world will be full of Indians, and those Indians which are carrying the value system, which are having the characters behind them, and those Indians will be spreading the messages of Swami Vivekananda or the philosophy of Vedanta or the philosophy of Gita. So this is what is the economic progression. So likewise, if at all we have got a society to build in, this is what is the spiritual foundation has to be strengthened. And if at all we want to have our economic progression, all of us had got a role to contribute, just like the small squirrel contribute in putting the small bit of sand and dust in the Ramashetu and created the wonders in the world. So let us be the squirrels, as Swamiji always say, let us be the squirrels, put our little bit of effort for the development of Bharat, India. Let us all pray again at the feet of all these great sages, the saints, that let them bless us, and we are going to be the torch bearers for the economic progression of our country. Dhanyavad. Thank you.